बताया जा रहा है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री 2030 तक हिंदुस्तान में $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री होगी। हमारी जीडीपी का 13% हिस्सा जो है वो रियल एस्टेट से आएगा। खास करके पिछले 3 साल में 2020, 21 और 22 में 2.5 साल में तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपया रियल एस्टेट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है। लेकिन मेरे को एक शिकायत है आप लोगों से, और शिकायत यह है कि उस 4 लाख करोड़ में से हम लोगों के हिस्से, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे हिस्से लगता है 10-20 हज़ार करोड़ से ऊपर नहीं आया। क्यों भाई, इससे ऊपर आया क्या? तो क्या हुआ, ये जो बंबई दिल्ली वाले हैं ये इस 4 लाख करोड़ का बड़ा हिस्सा अपने पास रोक लेते हैं। तो हमको खास तौर पे आज ये सोचना पड़ेगा, दीपक पारिक जी भी आ रहे हैं, अंकुर गुप्ता जी हमारे साथ हैं, इन सब से हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो 4 लाख करोड़ रुपए 2 साल में आया और अगले साल में और शायद 4-5 लाख करोड़ रुपए आने वाला है, ये हमारे मार्केट में कैसे आए? भोपाल में, इंदौर में, जयपुर में, रायपुर में, पटना में, चंडीगढ़ में, अहमदाबाद में, औरंगाबाद में ये पैसा हमारे पास कैसे आए? तो बस इसी के साथ मैं आप तो अनुरोध करूंगा कि इस कॉन्क्लेव का पूरा फ़ायदा उठाएं और जो भी लर्निंग है आपकी उसको आपस में नेटवर्किंग भी करके दूसरा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। May I first request you to please officially inaugurate the Learning Conclave by lighting the ceremonial lamps, sir. अब स्टेज पर आ रहे हैं HDFC समूह के अध्यक्ष श्री दीपक पारिक। True to the focus to today's conclave, which is Tier 2 and Tier 3 cities, the Dainik Bhaskar Group started in Bhopal, which is not a metro city. And from there it went from strength to strength, building a deep presence across several states of the country. The underlying message that I want to give is that good product or a good service does not have constraints based on its geographic presence. More importantly, there's such a huge growth potential in India that the only way to tap into this is to reach into deeper geographies. This is where India's future is. And this is where the India's future is unfolding. Currently, 32% of our population reside in urban areas, in cities. And this is expected to go to 40% in the next 5 years. Recent estimates forecast the Indian real estate market is likely to touch $1 trillion size by 2030. India still has a huge market housing shortage, estimated at over 29 million units. 66% of our population is under the age of 35. This is your market. This is your future. This is the cohort that are future buyers. This is the group that is considerably more flexible in choosing the location from which they will want to work. Gone are the days when every new qualified worker was flocking to the location from which they will want to work. Gone are the days when every new qualified worker was flocking to the metro cities for work. Though the jury is still out from work from home, a large part of workforce is veering towards a hybrid system. The rise of remote working has undoubtedly will boost the demand for housing across Tier 2 and Tier 3 cities. However, there are two critical factors that help develop new cities. First is infrastructure and second is job creation. Particularly in the services sector, we have already seen this play out well. Take the GIFT City example in Ahmedabad. It is gaining huge traction due to the number of government initiatives to attract investments as an international financial center. Other cities like Jaipur, Indore, Coimbatore, Chandigarh,
Trivandrum, Bhubaneswar, Baroda, Vizag, amongst others, have seen a healthy mix of IT and IT-enabled service companies that consciously chose to operate out of Tier 2 and out of Tier 3 cities. Beyond the IT sectors, Tier 2, Tier 3 cities have been attractive destinations for global capability centers, which leverage quality talent and capabilities in India. India commands over 50% of the world's market share for global capability centers. Clearly, there is a huge wage and cost advantage. Further, the cost of living is lower, which is another reason why these cities become more attractive. An interesting statistics from Deloitte report claims that from the top 10 states providing employable pool in India, over 50% employable are from Tier 2 cities as compared to 30% from Tier 1 cities. So employability is better in Tier 2 cities than in Tier 1 cities also. In equal measure with the government's focus on making India a global manufacturing hub and with the development of industrial corridors, the opportunities for real estate development have increased manifold. There is growing demand for new real estate assets such as warehousing, fulfillment centers, data centers, hospitality, lab offices, amongst others, expanding into Tier 2 and Tier 3 cities and beyond. To conclude, again, I could not be more optimistic about India's future and the opportunities that will unfold as we reach into deeper geographies of the country. So you have a great future. Thank you. भारत में टियर 2 और टियर 3 शहरों में रियल एस्टेट का विकास बढ़ रहा है। इस पर विस्तार से बात करने के लिए आए श्री अंकुर गुप्ता, जो ब्रुकफील्ड रियल एस्टेट ग्रुप के मैनेजिंग पार्टनर हैं। 22 years ago, when I first moved to Bombay for college, foreign investment could not come into India. India में foreign investment allowed ही नहीं था. Forget Bombay, Delhi, Bangalore, Chennai, Bhopal or Indore. India was close to the idea of foreign capital. Similarly, a decade or 2 decades before that, foreign capital had not touched the shores of most emerging economies. And when I say emerging economies, the major ones like a China or whatever. And the reason I say this is, look how the world has changed. जब हम न्यूज़ सुनते थे दूरदर्शन की रात को 8 बजे वाली और 9 बजे इंग्लिश में आती थी, तब 4 शहर दिखाते थे इंडिया में, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास कहते थे, चेन्नई और कोलकाता. Already that definition now has become 7 cities or 8 as you define them. And within those clusters, which are not cities, they are urban clusters, there are several small cities. So the definition of Tier 1 town has changed in the last 15 years, has changed in the last decade. And if we truly believe that this will be India's century, people who are much more knowledgeable and intelligent than I am have emphatically said that this will be India's century, certainly India's decade, and several decades. For a few key reasons, there is real growth happening in India. We have a fantastic demographic, which means that the growth that we are on is semi-permanent. The reason I say semi-permanent and not permanent is it is likely permanent, but we can get complacent. So let's call it semi-permanent. And that growth has a lot of legs to it. We are still a very young country. Our median age is 28. Long-term growth is about population growth, population moving into consumption and production economy, more women getting into the economy, and an increase in efficiency of the working population. Now, all 4 or 5 factors are a big green tick mark in India, which was probably the case in the US in the 1950s and 60s, where all these factors came together. And imagine what that country became post-World War II. So we have all that elements of becoming that fantastic economy that we have all dreamt of as kids. But that engine, if India were to become a 10 trillion economy, will never be able to get fulfilled from
7 tier 1 towns as they're called. We need to have broad-based growth. Our urban centers are choking for basics, for roads, for quality air, for water, for jobs as well. So it's contingent upon this group to actually provide that next level of growth. And I've always said it that India, urbanization is a story that everybody reads. The real story that India needs is suburbanization of India and creation of these urban clusters with fantastic suburbs and connectivity. अब हमारे साथ स्टेज पर शामिल हो रहे हैं गौतम सिंघानिया, लाइफस्टाइल ब्रांड रेमंड के एमडी, जिन्होंने पिछले कुछ समय में रियल एस्टेट की दुनिया में धूम मचा दी है। नॉन रियल एस्टेट कंज्यूमर ब्रांड, अपैरल, रिटेल, यू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर, वो आपने अपने रियल एस्टेट एक्सपीरियंस में एक्सटेंड कैसे किया? देखिए, आज एक रेमंड ब्रांड में ट्रस्ट है, एंड द ओनली वे यू कैन बिल्ड द ट्रस्ट इन द रियल एस्टेट ब्रांड, आज मैंने जैसे आपको अर्लियर कहा कि फैब्रिक में भी इमोशन बहुत है, इट मेक्स यू लुक गुड, मेक्स यू फील गुड। आज आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ फैब्रिक में। अगर आप जो भी शर्ट पहने हो या जैकेट पहने हो, अगर आप खाली उसमें से लेबल निकाल दें, एक लेबल आता है, पीछे आता है जैकेट में, आप अगले बार वो जैकेट पहन नहीं पाओगे। आप एक बार ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करिए। वो ह्यूगो बॉस का भी हम बनाते हैं, मार्क्स एंड स्पेंसर का भी हम बनाते हैं, वही सेम सूट पे मैं दूसरा लेबल लगा करके तीसरे प्राइस में बेच देता हूँ। नाउ रियल एस्टेट में भी इट इज ऑल अबाउट इमोशन, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आज जब आदमी घर खरीदता है, it is a very, very big decision for him. And all his savings, not only his savings, but the loan from the bank, he overstretches and he wants to buy a house. अभी 50 साल पहले क्या होता था, हम लोग कहते थे कि जब हम 70 साल के हो जाएंगे हमें घर खरीदेंगे सेविंग्स के साथ। आज आपको फाइनेंस अवेलेबल है, तो आज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। इन अ होम परचेस, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे गिरीश हो, चाहे कोई भी हो, it's a very emotional decision. It's a very big moment in a person's life. And if you commit something, the most important thing is if you commit something and don't deliver, there will be a huge backlash. And हमने क्या किया, हमने जो रेरा का कमिटमेंट था, हमने 18 महीने, so 10th December 2022, मैंने 900 अपार्टमेंट 2 years ahead of रेरा डिलीवर कर दिया। और दूसरी चीज, जनवरी 2021 में वी पुट अ काउंटडाउन टाइमर ऑन आवर वेबसाइट एंड इन द एक्सपीरियंस सेंटर, एंड इन दैट एक्सपीरियंस सेंटर इट सेड 384 days, 59 hours, and say, and I'll explain in a minute, Girish, what this did. People didn't believe me, and I put out Instagram posts when the buildings came up, कि silencing my critics. जब मैंने फेज 2 लॉन्च किया, फेज 2 के 100 अपार्टमेंट बिकने में मेरे को 21 दिन लगे, 21-22 दिन। उसके बाद 10 दिसंबर आया एंड मैंने 900 अपार्टमेंट डिलीवर किए। फेज 3 जनवरी में जब मैंने लॉन्च किया, बिकॉज दिस शोज व्हाट आई एम कमिंग टू इज डिलीवरी इज वेरी वेरी क्रिटिकल। जब मैंने लॉन्च किया, इन फेज 3 वी सोल्ड 100 अपार्टमेंट्स इन 36 hours, एंड फेज 3 टुडे हैज ऑलरेडी सोल्ड ऑलमोस्ट 19% ऑफ इन्वेंट्री इन 3 months। तो ये जो ट्रस्ट है, ये बिजनेस में ट्रस्ट इज डिलीवरी। अब समय है एक ऐसे खास सेशन से जुड़ने का जिसमें हिस्सा लिया HDFC और कोटक महिंद्रा जैसी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने। Is real estate financing today expensive in India? Okay? Or is it a situation wherein we are trying to solve, which every industry, every sector is trying to solve, that is reduce the cost? Is the cost on the higher side specifically? Cost of
funding for real estate has been higher. मेरे ख्याल में cost of capital देखें तो हम लोग capital markets हैं तो equity capital है और debt capital है. Equity capital में cost of capital होती है risk free rate और equity का risk premium adjusted for industry या वो particular जो issuer है उनकी जिसको हम हमारी लैंग्वेज में बीटा बोलते हैं, बट समझ लीजिए आप उसकी वेरिएबिलिटी अर्निंग्स की या उनकी वॉलेटिलिटी इन द मार्केट. एंड एक्विटी जनरली अगर आप देखें टोटल एक्विटी मार्केट में रिप्रेजेंटेशन इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बाद भी और इतना पोटेंशियल होने के बाद भी एक्विटी मार्केट में आज की तारीख में रिप्रेजेंटेशन रियल एस्टेट सेक्टर का बहुत कम है. सेक्टर का साइज, उसकी पोटेंशियल, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर कंपेयर करें तो बहुत बड़ा गैप है. डेट साइड में देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक रिस्क फ्री रिटर्न होता है, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बॉन्ड है, बट उसके ऊपर जो क्रेडिट स्प्रेड्स होता है वो अगेन वही चीज़ है, हर एक इंडस्ट्री और हर एक बोरोवर के हिसाब से ऊपर नीचे होगा. बट ये इंडस्ट्री में चूंकि हिस्टोरिकली रिस्क लेवल ज़्यादा रहा है उसकी वजह से शायद रेगुलेटर्स को भी डर लगता है, तो बैंक्स को अलाउड नहीं है लैंड परचेज फंड करना या कई दूसरे जो एक्सपोजर है रियल एस्टेट से रिलेटेड, तो जो रिस्क वेट्स वगैरह हैं जो होने चाहिए उससे मुझे ऐसा लगता है शायद ज़्यादा है. आप में से कितने लोगों ने खोसला का घोसला मूवी देखा है और कितने लोगों ने जंजीर मूवी देखा है? तो सर आपको तो आंसर मालूम है, मुझे बोलने की क्या जरूरत है. एक बिल्डर की रेप्यूटेशन क्या है, खोसला का घोसला में देखने को मिलती है, जाने भी दे यारों में देखने को मिलती है. और इसीलिए जब ये पैसा लेने जाते हैं तो लोग कीमत ज्यादा मांगते हैं. और जंजीर में प्राण का किरदार था, वो कर्जा लेने जाता है, सामने वाला सिक्योरिटी मांगता है, वो अपनी मूंछ का बाल दे देता है और उसे पैसे मिल जाते हैं. तो जिस दिन खोसला का घोसला से जंजीर का फासला पूरा हो जाएगा तो आपको सबको सस्ते भाव में पैसे मिलेंगे. ऑन अ सीरियस नोट, आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री को देखिए कि एक बैंकर, एक फंड मैनेजर, आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे फ्लैट हुआ चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी हुआ, उसकी अवेज में, उसकी सिक्योरिटी पे आपके कस्टमर को 7.5, 8, पौने 8% पे लेंड करता है. और आप जो बनाने वाले हैं, जो आपके जनक, जो आप उस चीज के जनक है, उसके पास से हम लोग 12, 13, 14, 15% मांगते हैं. तो ये एक फासला है जिसे आपको पूरा करना है. आप ये कह सकते हैं कि हम बैंकर बेवकूफ है, बट दूध का जला छाछ भी फूक फूक के ही पीता है. इस रोचक स्तर के बाद ईटी नाउ के अजय शर्मा ने उद्योग जगत के विशेषज्ञों से बात की, जिन्होंने आज के बाजार में उपभोक्ता की जरूरतों पर अपने विचार साझा किए. The idea of this discussion is that we have among the audience developers from tier 2, tier 3 cities in our country, which are witnessing a very high growth right now for a variety of factors. And even the customer profile and the buyers are demanding value. At the same time, they don't want to compromise with quality. Affordability has improved a whole lot. So with your experience at your various organizations, you would like to share how they can. There's also industry tailwind now. After 10-year gap, the industry has turned around and it's in a good spot. How our developer friends over here can play the same game which players such as yours have played at the in larger cities in the same manner and make the best of this environment. So Rohit, why don't you start with your thoughts? So I think, like you said, it's after a long time that the real estate sector, we have tailwinds, right? And it's on the back of affordability. So while real estate rates in the last 7-8 years haven't gone up as much as salaries have gone up, our interest rates today, even though they've gone up a little bit, it's still at the same 6-7-year-old sort of number. So affordability is up substantially.
So in that sense, it's a really good time as far as the market is concerned. What I've seen over my years is that when times get good, everybody gets extremely bullish. Everybody decides to get aggressive. We go out and money starts flowing in our direction, right? The private equity funds, debt becomes easy, debt becomes cheap for us. Things look great, and then you get hit by the down cycle. So this is a good time. It's a great time to be aggressive. It's a great time to be optimistic. But at the same time, my only advice to people is don't go beyond your capacity to sell and deliver. Mohit, आप अपने experience से बताइए. When you were at the MD/CEO level at Godrej Properties, couple of things which you can share with our developer friends over here, specifics in terms of some practices which you did, which helped you really propel the business आगे. One of the reasons why Godrej Properties was extremely successful was because we focused a lot on governance, customer, was the heart of the organization. Customer centricity was the key element of our strategy. And I'll give you one statistics. एक कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए एक मेजर होता है नेट प्रमोटर स्कोर. जैसे अगर आप ऊबर कभी लें तो वो आपको एंड में मैसेज भेजते हैं कि आप हमें 1 to 10 में रेट कीजिए. If you rate them 9 and 10, it's called promoter. That means you will talk positively about that brand. If you rate them 1 to 6, you are going to be a detractor. It means आप negative बोलेंगे. Difference of the two is called net promoter score. हमने जब अपनी जर्नी शुरू की 2018 में, when we started measuring this in a big way, because customer centricity became a big part of our strategy, our net promoter score was closer to 0. So we were as many promoters as detractors. In the 5 years journey, after spending a lot of energy, effort on customer centricity, getting customer issues resolved, making sure processes are redesigned to make sure customers are extremely happy, the net promoter score went up to as much as 55, which is probably the highest in any category across industries, not just real estate. So customer is again something which is extremely important. So summarizing, customer is someone we cannot ignore. Execution capability has to be built in depending on the scale one is targeting. And the third is risk management, which is both financial risk management and multiple other dimensions. तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि बाजार क्या चल रहा है, हम लोग क्या करना चाहते हैं और आगे क्या करेंगे. तो पहले मैं शुरू करना चाहूँगा एक छोटे सेंटर से, नासिक से. आप नासिक से हैं ना सर? तो मैं नासिक से शुरू करना चाहूँगा कि आप बताएं हमको कि नासिक में आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो बाकी के शहर के लोग कुछ लर्निंग निकाल सकें उससे. We are not getting driven away by कि पूना में 5 BHK के फ्लैट्स बहुत हो रहे हैं तो हम भी सारे 5 BHK फ्लैट्स बनाए. बॉम्बे में 8 करोड़ और 9 करोड़ में लग्जरियस फ्लैट्स बन रहे हैं, या यहाँ पे आके कोई गोल्फ कोर्सेज बना रहे हैं. तो नासिक में गोल्फ कोर्सेज बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए. वी आर एक्चुअली अनलर्निंग थ्रू क्रिडाई एंड थ्रू नरेडको टू डू द राइट थिंग बाय अ लॉट ऑफ रिसर्च, बाय लॉट ऑफ प्राइस एनालिसिस. हम लोग काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड फास्ट ड्राइविंग कंस्ट्रक्शन मेथड्स पे काम कर रहे हैं. बट हम काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन हमें दिखाना नहीं आ रहा है, हमें मार्केट करना नहीं आ रहा है, हमें अपने आप को पोजीशन करने नहीं आ रहा है, हम ब्रांड डेवलप करने में बिलीव नहीं करते हैं. हम पैसा लगा के काम करने को तैयार हैं लेकिन नेगेटिव कैपिटल, जैसा उन्होंने कहा, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल में काम नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारी कोई एक आदत हो गई, ट्रेडिशनल हम करते हुए आए हैं, उसमें हमने सक्सेस देखी है. तो आई थिंक वी नीड टू चेंज अवर परसेप्शन एंड डू एज यू सेड कि अगर हम सब चीजें राइटली प्लेस्ड हैं, हमारी टीम राइटली प्लेस्ड है, लोकेशन अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो व्हाई कांट वी मार्केट दैट इन आवर वे. Our group is forever in the quest to improve the environment in which we do business. And today's real estate, the second real estate conclave, the second one, the second edition is one such effort to work more closely with you. Thank you so much.